Good morning, class 12. In business study class, today's our chapter is chapter number 9.3. In the previous video, हमने बेटा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट का टॉपिक कंप्लीट किया था. Today's our topic is working capital requirement. First of all, the meaning of working capital. Working capital, it means the requirement of working capital requirement means the requirement of finance for payment of day-to-day expenditure, and the working capital can be find out current assets minus current liability. Basically, the working capital are divided into two parts: net working capital and gross working capital. Net working capital can be find out by the current assets minus current liability. And here is the example. A balance sheet is to be given of a company organization, that is current liability 35,000, fixed liability 2,15,000, current assets 50,000 and fixed assets 2 lakh. So we have to find out the working capital, and working capital can be find out current assets minus current liability. It means 50,000 minus 35,000. So the amount of working capital is 15,000. So working capital means requirement of money for payment of day-to-day expenditure, and it may be divided into two types: net working capital and gross working capital. Net working capital can be find out current assets minus current liability, and the gross working capital is the aggregate of current assets. Here is the requirement of working capital. What is the objective for working capital and what is the requirement for working capital? Number one, need of working capital is payment of daily expenses, payment of current liability on time, taking advantages of cash discount, taking advantage of favorable opportunity in market, and continuity in production. So this is the need of working capital. Now the concept that some of the factor which affect the requirement of working capital, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस. बिजनेस may be divided into two types: manufacturing business and trading business. In manufacturing business, the production, the raw material is converted into finished product, and in the trading business we purchase only the finished product and for the resale purpose. Purchase of finished product for the resale purpose is the activity of trading business. So depends upon the nature of business. In manufacturing business, the requirement of working capital is higher, or in the trading business, the requirement of working capital is less. Number two, scale of operation. अगर if the business is at large scale, अगर हमारा business large scale पे है तो हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज इंक्रीज हो जाती हैं. रॉ मटेरियल को हम फिनिश गुड्स में जब कन्वर्ट करते हैं, देन इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एट ए लार्ज स्केल, देन द एक्टिविटी ऑफ बिजनेस इज हायर एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज आल्सो हायर. अगर हमारा बिजनेस लार्ज स्केल पे है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, और अगर हमारा बिजनेस जो है वो स्मॉल स्केल पे है, देन द रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस कैपिटल वर्किंग कैपिटल इज लेस. नंबर थर्ड इज बिजनेस साइकिल. बिजनेस साइकिल क्या होता है बेटा? बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, राइट. कभी बिजनेस में हायर लेवल पर होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट होता है. मैक्सिमम प्रॉफिट के बाद बिजनेस डाउनवर्ड करना स्टार्ट हो जाता है, डेक्लाइन. इसके बाद फिर इंप्रूव होता है, राइट. सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ बूम, देन दिस इज द सिचुएशन ऑफ डेक्लाइन, देन इंप्रूवमेंट, देन अगेन बूम, देन डेक्लाइन, इंप्रूवमेंट. इसी तरह से ये एक साइकिल चलता रहता है. इसको हम बिजनेस साइकिल बोलते हैं. सबसे पहले बिजनेस जब अपनी हाईएस्ट प्रॉफिट पीक पर होता है, उस सिचुएशन को हम बूम सिचुएशन बोलते हैं. और पीक पे इट मींस देयर इज लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटीज इज टू बी परफॉर्म्ड टू कंप्लीट द ऑर्डर, बिकॉज बिजनेस इज एट पीक एट द बूम सिचुएशन. So the activities is higher, then the requirement of working capital is also higher. And when there is a decline, the business activity is less, so the requirement of working capital is less. तो बूम की सिचुएशन में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हायर होता है, और डेक्लाइन की सिचुएशन में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डाउनवर्ड होता है. सो डिपेंड अपॉन द बिजनेस साइकिल आल्सो.
Number 4, seasonal factor. Some of the seasonal factor is also plays a very important role in deciding the working capital. कुछ ऐसे प्रोडक्शंस होते हैं जिनको हम, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनका मैन्युफैक्चरिंग हम पूरा साल करते रहते हैं, right? So there is no need to store the raw material. So if the manufacturing is to be done for the whole year, then the requirement of working capital is less. लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो सीजनल प्रोडक्ट होते हैं जिनका मैन्युफैक्चरिंग हम जो है वो साल के कुछ ही महीनों में करते हैं, तो उसके लिए हमें रॉ मटेरियल को ज्यादा स्टोर करना पड़ता है. देन द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज हायर. जस्ट फॉर एग्जांपल, वूलन प्रोडक्ट is to be woolen cloth is to be produced in the some of the month, and the demand is also in the some of the month of a year. So when these products are to be manufactured, then the requirement of raw material is higher, so the working capital is also higher. So depend upon the seasonal factor. Then is production cycle. Production cycle, the time involved in production cycle. It means the times involved in the when the raw material is converted into the finished product. So depend upon the time. If the time is higher, then the requirement of working capital is also higher. और अगर आपका प्रोडक्शन साइकिल रॉ मटेरियल को जब हम फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो जितना टाइम रिक्वायरमेंट होता है, दैट विल बी नोन एज द प्रोडक्शन साइकिल. अगर आपका हमारा प्रोडक्शन साइकिल में टाइम जो अवेलेबिलिटी इज हायर, देन द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज आल्सो हायर. और अगर हमारा प्रोडक्शन साइकिल स्मॉल है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी लेस हो जाएगा. नेक्स्ट इज क्रेडिट अलाउड, राइट. अगर क्रेडिट अलाउड, अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सारी सेल कैश में होती है, then the requirement of working capital is less because the cash is available in the business. And if the sale is made on the credit, then the requirement of working capital is higher because cash is not available in the business. Next is credit availed. Credit availed means loan facilities. अगर बिजनेस को लोन फैसिलिटीज इजिली अवेलेबल हो जाती है, क्रेडिट इजिली अवेलेबल है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का लेस नीड होगा. और अगर क्रेडिट यानी कि लोन फैसिलिटीज हमें इजिली अवेलेबल नहीं होती, देन देयर इज द नीड ऑफ मोर हायर वर्किंग कैपिटल. नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग एफिशिएंसी. ऑपरेटिंग एफिशिएंसी मीन्स the converting of raw material of into finished goods earlier, selling the finished goods quickly and quickly getting the payment from debtor. अगर हम अपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में जल्दी से कन्वर्ट कर लेते हैं और सेल भी क्विकली करते हैं और डेटर से मनी भी कलेक्ट क्विकली करते हैं, यानी कि दिस टाइम विल बी नोन एज ऑपरेटिंग एफिशिएंसी. तो अगर हमारी सेल भी क्विक हो रही है, डेटर से मनी भी हम क्विक जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं, और हमारा रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में भी इजिली और टाइमली क्विकली हो रहा है, देन इट्स ए ऑपरेटिंग एफिशिएंसी. और अगर इन सब में हमारा टाइम जो है वो कम लगता है, देन द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज लेस बिकॉज द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी इज हायर. So if the operating efficiency is higher, then the requirement of working capital is less, and if the operating efficiency is low, then the requirement of working capital is higher. Then the availability of raw material. अगर हमें raw material easily available हो जाता है, if the availability of raw material easily available of raw material, then there is no need to store of the raw material, then the requirement of working capital is less. अगर हमें रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल हो जाता है तो हमें रॉ मटेरियल को स्टोर करने की नीड नहीं होती, जिससे हमारा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट लेस होती है. और अगर हमें रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल नहीं होता तो हम ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो स्टोर करते हैं, जिससे कि हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हायर हो जाती है. नेक्स्ट इज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट. इफ देयर इज ए ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, if the chances of growth, opportunity of growth is higher in the business organization, then the activity of business is higher, so the requirement of working capital is also higher. Then the level of competition. If the level of competition in the market is available higher level of competition require the higher level of working capital. Then the inflation. Inflation means rise in price. अगर आपका रॉ मटेरियल एंड द अनदर सोर्सेज इज आल्सो अवेलेबल एट ए हायर प्राइस, then the requirement of working capital is also need of working capital is also higher, and if it is available at a reasonable price,
then the requirement of working capital is less, so depend upon the inflation also. So student, these were the factors which are affecting the working capital. With this chapter, the chapter number 9.3 and the unit 9 is completed now. You have to make your notes and you have to learn this unit very carefully, right? Then the unit number 10 in the next video. Thank you.